So in this lecture, we'll discuss about the electrochemical cell. So it is a device in which interconversion of electrical and chemical energies takes place is called electrochemical cell. तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये वो डिवाइस है जिसमें कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस यानी इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी को एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं. So that is called electrochemical cell. So you can say that it is an energy device which either a chemical reaction takes place by using electric current, such as electrolysis, or chemical reaction produces electric current, such as electric conductance. So ये बता रहे कि ये एनर्जी एक डिवाइस है जिसमें जो ना केमिकल रिएक्शन होती है और ये केमिकल रिएक्शन कैसे होती है इसमें हम केमिकल रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट हम इस्तेमाल करते हैं. तो यानी जिस तरह ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं तो इन्हीं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो हम यूज़ करते हैं करंट ना और chemical reaction produces electric current such as electric conductance. यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक केमिकल सेल है ये एक एनर्जी डिवाइस है जिसको हम करंट के जरिए चलाते हैं और वो करंट कैसे पैदा होता है या तो हम उस करंट को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए से पैदा करते हैं. इस तरह ये इलेक्ट्रोलिसिस है तो इसके जरिए पैदा करते हैं या फिर जो ना ये इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पैदा करते हैं ये केमिकल रिएक्शंस के जरिए से पैदा करते हैं. तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल cells are of two types. You can say one is electrolytic cell and the second is voltaic cell, also called galvanic cell. So let's first come towards electrolytic cell. So you can say here in this chapter you can say the detail of electrolytic cell uh, may be given in the next chapters. So here the same is not given. So we will discuss about the concept of electrolysis. The concept of electrolysis. Electrolysis in a substance in solutions or you can say electrolytes. The concept of electrolytes. An electrolyte is a substance in solutions or in molten state which dissociates or ionizes into positive or negative ions and conduct electricity. For example, NaCl, HCl, KCl, etc. So a substance you can say can be strong, weak, or non-electrolyte depending upon their degree of dissociation or ionization. So you can say that what is electrolytes? Electrolytes ये क्या चीज़ है? तो electrolytes जो है electrolytes क्या कि ये एक substance होता है solution के अंदर यानी ये molten state के दौरान यानी molten state में जो which dissociate जो dissociate ionize करता है ionize होता है into positive and negative ions. तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर या मोल्टन स्टेट के अंदर मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में
एक जो है ना सब्सटेंस होता है जो डिसोसिएट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, ये जो होता है कि सोडियम क्लोराइड, Cl, potassium chloride or NaOH. So these are electrolytes. So a substance can be strong, weak, or non-electrolyte depending upon their degree of dissociation and ionization. एक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। तो इसका निसार जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन पे होता है। तो ये जो है ना इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। So first we will discuss about the strong electrolytes. You can say this one is a strong electrolytes. Strong electrolytes are those substances which dissociates or ionize completely in aqueous solution or in water state and conduct electric current to a large extent. For example, H2SO4, HNO3, NaCl, NaNO3, etc. So these are strong electrolytes. Strong electrolytes क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो आयनाइज होते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर एक सोल्यूशन में। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एक सोल्यूशन में मुकम्मल डिसोसिएट हो जाते हैं या आयनाइज हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मिसाल के तौर पर ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड CO3 ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो sodium chloride example of strong electrolytes. So it dissociates into ions. So you can say that sodium and chloride ions. So this is the aqueous solution of sodium chloride, in which uh, the sodium chloride, you can say strong electrolyte, dissociates, uh, dissociate or ionize. Yeah, dissociate or convert into ions in aqueous solution. This is, you can say, aqueous solutions. So it dissociates into sodium and chloride ions. Similarly, HCl in aqueous solutions dissociates into H plus and Cl minus. So this is called, we can say these are called strong electrolytes. Now let's come towards weak electrolytes. Weak electrolytes are those substances which dissociates or ionize slightly, partially in aqueous solutions or in molten state, and conduct electricity to a very small extent. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या चीज़ है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस है जो आयनाइज होते हैं या डिसोसिएट होते हैं थोड़े से, यानी जो कम जना डिसोसिएट होते हैं, जो स्लाइटली डिसोसिएट होते हैं, मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट नहीं होते या आयनाइज नहीं होते एक सोल्यूशन में, उसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो और इलेक्ट्रिकल जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी को यानी इलेक्ट्रिक करंट को मामूली तौर पर उसमें से पास होता है, तो उसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मिसाल दी गई है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड है, और बेंजोइक एसिड है। I can say these are weak electrolytes. This is example of ammonium hydroxide, which dissociates into ammonium ions and OH ions. And this is the example of acetic acid, which dissociates into acetate ions and hydrogen ions. The third one is non-electrolytes. Non-electrolytes are those substances which don't dissociate or ionize in aqueous solutions or in water state, therefore don't conduct electricity. For example, benzene, sugar, urea, and glucose. So you can say that non-electrolytes are those वो सब्सटेंसेस जो
एक्वस सोल्यूशन यानी कि पानी में आयोनाइज नहीं होते तो उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इसमें करंट भी पास नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो पास नहीं होती। तो सारे तौर पे बेंजीन है, शुगर है, यूरिया, ये ग्लूकोज, ये क्या है, इसमें से करंट पास नहीं होता, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन में आयोनाइज नहीं होते हैं। Next one is electrodes. Electrodes are the conductors, because metallic plates, wires, or rods, so which electrons enters or leaves the electrolytes in a cell. तो इलेक्ट्रोड्स जो हैं, ये कंडक्टर्स है, मसलन मेटालिक प्लेट्स है, वायर्स है, रॉड्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना या तो दाखिल हो जाते हैं या छोड़ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को सेल में। एग्जाम्पल, एक सेल है हमारे पास, तो उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना या उस सेल में जो है इलेक्ट्रॉन का इंटर होना, तो ये किसके जरिए से होता है, इलेक्ट्रोड्स के जरिए से होता है। सो दिस अकर ड्यू टू दिस electrodes, and electrodes are metallic plates, and these are wires, the rods. So due to which the escape of electron or interference of electron takes place in a cell. So next one is anode. Anode is a positive electrode at which the anions gathers and leaves the electrons in the electrolytic cell. Anions are the negatively charged particles such as Cl minus or H minus. So you can say that anodes क्या है, एनोड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें जो है ना एनाइंस, जिसके इसमें एनाइन जमा हो जाते हैं या फिर छोड़ जाते हैं एनाइंस। इन इन एनोड वो टर्मिनल है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसमें एनाइंस जमा हो जाते हैं and use the electrons in the electrolyte cells. तो ये एनोड इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो ये एनाइंस जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे क्लोराइड या जो OH आयंस है, these are anions. So next one is, you can say, cathode. Cathode क्या चीज़ है? Cathode is a negative electrode which cations gathers against the electrons in the electrolytic cell. So cathode जो है ना के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिसके जिसके जिसमें जो है ना कैटायंस गैदर होते हैं, या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यानी अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देखिए तो वहाँ पे जो कैथोड होगा वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे, और तो ये क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो such as sodium, yes, ammonium. These are cathodes. So this is given passing electric current through substance may produce a temperature change, such as lighting of electric bulb, or a permanent change like electroplating. Metals are good conductor of electricity. Gold and silver are the best electrical conductors because of their high cost value. Most
of the electrical wires are made up of copper and aluminium. तो ये कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर जो है ये गुड कंडक्टर्स, वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बिजली अच्छी तरह पास होती है गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन चूंकि ये महंगा होता है तो इसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो उसकी जगह हम कॉपर और एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट नॉट more than gold and silver. So next one is electrolytic cell. So some you can say some oxidation reaction don't occur spontaneously but can be driven by electrical energy. कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, यानी कि जो रिडक्स रिएक्शन होते हैं वो खुद ब खुद नहीं होते, स्पॉन्टेनियसली नहीं होते, बल्कि उनको जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए से बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। The process in which an electric current is used to produce an oxidation reaction is electrolysis, यानी वो अमल जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? वो अमल जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? करंट के जरिए, यानी हम अगर करंट पास करें तो उस करंट के पास करने से अगर रिडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस होगा तो उस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, in case of oxidation loss of electrons, or in case of reduction gain of electrons. So this is called electrolysis. So you can say where electrical energy is required to produce redox reactions and bring chemical change in electrochemical cells, such cells called electrolytic cells. तो जिस जगह पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस रिडक्स रिएक्शंस को क्रिएट करने के लिए, और उससे जो है ना ये केमिकल चेंज हो, यानी उसमें प्रोड्यूस होता है, आ जाता है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी जो हमने पहले पढ़ा कि जो हम रिडक्स रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का पास होना, उसमें से पास होना ज़रूरी है। तो यानी यानी वो ये अमल जिस सेल में, जिस सिस्टम में हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं रिएक्शन को, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो you can also say that it is a device in which non-spontaneous chemical reaction is carried out by passing electric current. Passing electric current. Example of electrolyte cell, you can say down cell, Nelson cell, and you can say Nelson cells, you can say. So इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो ये एक डिवाइस है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन कैसा होता है? यानी जब हम रिडक्स रिएक्शन क्रिएट करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जब हम करंट पास करते हैं तो उससे रिडक्स रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, और उस रिडक्स रिएक्शन के जरिए से केमिकल रिएक्शन वाक़ होता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल
केमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया। तो इसकी ये जो सेल नेल्सन सेल है और ये मतलब इसमें आगे तफसील दी गई है। तो electrolysis. So what is electrolysis? Electrolysis is defined as a process of decomposition or breakdown of electric electrolyte as ionic compound in fuse molten state or in solution by passing electric current. तो इलेक्ट्रोलिसिस को अगर हम डिफाइन करें तो ये वो अमल है जिसमें केमिकल डिकम्पोजिशन यानी वाक़या होती है या हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक डाउन करते या डिकम्पोज करते हैं या यानी कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं यानी तो सोल्यूशन में जब हम करंट पास करते हैं यानी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस वो अमल है कि जब हम सोल्यूशन में से करंट पास करते हैं तो उस करंट पास करने से सोल्यूशन के अंदर जो यानी कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उस अमल को इस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। So we can say that electrolysis is defined as the process of chemical decomposition or breakdown of electrolytic or ionic compound in a fused solution uh, by passing of electric current. So this is called electrolysis. Next one is construction of electrolytic cell. So electrolytic cell को you can say this is the construction of electrolytic cell. Electrolytic cell consists of solution of electrolyte. The two metallic plates called electrodes, which are called anode and cathode, are dipped in the electrolytic solution. The electrodes are connected to the terminals of the battery. The electrode which is connected to the positive terminal of the battery is called anode, and the electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode. So you can say this is the construction of an electrolytic cell. So in this case, you can say that electrolytic cell consists एक इसमें सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। इसमें टू मेटालिक प्लेट्स जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं वो लगे होते हैं। जिस तरह ये मेटालिक प्लेट्स है नीचे दी गई है ये वाला है ये टू मेटालिक प्लेट्स है ये इसमें से एक एनोड है ये एक एनोड है और एक कैथोड है। तो ये वाला जो है ये एनोड है और ये वाला कौन सा है ये कैथोड है। तो ये जो एनोड और कैथोड है इसको हम एक सोल्यूशन में डीप किया होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने बैटरी के टर्मिनल से बनाया होता है। तो वो इलेक्ट्रोड जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिलाते हैं उसको हम एनोड कहेंगे। जैसे ये है यानी ये जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल और द बैटरी के साथ हमने इसको बनाया हुआ है तो इसको हम एनोड कहेंगे। ये एनोड है और वो इलेक्ट्रोड जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जिस तरह ये बनाया होता है उसको हम कहेंगे कैथोड। उसको हम कैथोड कहेंगे। सो ये एक बैटरी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो यहाँ पर ये लाइन्स है ये नेगेटिव चार्जेस वाले लाइन्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज वाले कैटाइन्स हैं। तो ये एनोड है और ये कैथोड है। राइट साइड पे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज है।
तो अब एनोड, यहाँ इस एनोड के ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ बनते हैं, एनोड के ऊपर इस साइड पर इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये कैथोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रेवल करते हैं आउटर सर्कल के जरिए, यानी ये ट्रेवल करते हैं इस तरह का, इस यानी ये ऐसे ट्रेवल करते हैं पॉजिटिव, यानी कैथोड की तरफ ये ट्रेवल करती है। और जब ये कैथोड की तरफ ट्रेवल करती है तो कैथोड के इर्द गिर्द जो कैटायंस होते हैं, ये वाले जो कैटायंस है इसके इर्द गिर्द ये कैटायंस ये इसको कंज्यूम करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को। तो it says that the working of an electrolytic cell, when the electrodes are connected to the battery and electric current is passed in the electrolytic cell, the ions in the electrolytes move towards their respective electrodes. The ions liberate electrons at the anode. The electron pass to the outer circuit in the cathode. The cations which surround the cathode consume those electrons. Hence, the number of electrons lost is always equal to the number of electrons gained. So the battery can be thought of an electron pump simultaneously supplying electrons to the cathode and receiving electrons from the anode. The anions move towards uh, anions move towards anode and discharge their electrons there, and thus accretion takes place at the anode. The cations move towards cathode and gain electrons, and thus reduction takes place at cathode. For example, when electric current passes from aqueous sodium chloride NaCl, the following reaction takes place during this process. So we can say that एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन। कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनते हैं, ट्रेवल करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, तो ये जो कैटायन जिसको कंज्यूम करते हैं, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो कंज्यूम होती है, यानी दोनों कंजम्पशन और प्रोडक्शन ये सेम होती है। The electrons lost is equal to the number of electrons gained. तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड जैसे it produces dissociates into sodium and chloride ions. So chloride ions, you say, it loses two electrons. Sodium will gain two electrons to produce sodium metal. Chloride will lose two electrons. Uh, so cell will be gained by sodium, two sodium atoms. So the net reaction will be two sodium will react with two chloride ions, produces two sodium plus sodium metal, two sodium metal plus chlorine molecule. So this is the net reaction. So next one is methods
recovering metals from its ore. So we can say electrolytic purification of metals. You can say refining of copper. So pure copper is a very good conductor of electricity and is used in electrical instruments. Copper is purified by electro-refining. Large blocks of blistered or impure copper are suspended as a note in the copper sulfate and sulfuric acid solution between thin sheets of pure copper, which acts as a cathode. The operation is performed at 50 degrees Celsius and applied voltage of about 0.3 volts and optimum currents density used to 160 to 400 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये कह रहे कि रिकवरिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, हम और जो है जो उससे हम मेटल्स को कैसे रिकवर करेंगे, यानी किस तरह साफ करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर को हम मिनरल से कैसे साफ करेंगे, यानी रिफाइन करेंगे। तो ये कह रहे कॉपर जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल की जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें यूज होता है। तो कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इट्स कैन से बाय इज प्यूरिफाइड बाय electro refining. So you can say by electro refining copper is purified. So large blocks of copper, blistered impure copper, जो impure के जिसमें यानी कि जो ब्लॉक्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें जिससे कॉपर को निकाला जाता है। तो जो इसमें यानी कॉपर प्योर हालत में नहीं होता, बाकी जो दातें होती हैं उनके साथ मिक्स होता है। तो उसको जो है ना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में उनको डाला जाता है। और 3 शीट ऑफ प्योर कॉपर, यानी 3 प्योर कॉपर जो होता है उसकी जो 3 शीट्स होती है बारीक हो, उसके दरमियान में ये बड़े बड़े ब्लॉक्स को डाला जाता है और उसके दरमियान में फिर कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन को डाला जाता है। तो ये जो प्योर कॉपर है ये एक्ट्स एज ए कैथोड काम करता है। तो द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया जाता है। तो इसके बाद फिर वोल्टेज 0.3 वोल्ट्स और करंट डेंसिटी इज 160 to 40 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से when the electric current is passed, copper dissolved, जब करंट इसमें से पास किया जाता है तो कॉपर जो है ना वो हल हो जाता है impure from the impure anode from the impure copper। तो कॉपर जो है ना जो impure कॉपर होता है वहाँ से वो डिजॉल्व हो जाता है। तो to give, तो ये कॉपर Cu+2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये अगर impure कॉपर जो है वो पड़ा हुआ है, बाकी जो कॉपर जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें पड़ा हुआ है, तो ये जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, सॉलिड जो कॉपर होते हैं वो इम्प्योर, ये सी डिजॉल्व होकर Cu+2 में कन्वर्ट हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। तो इसी तरह ये होता है एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर ये हो जाता है। तो कैथोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर जो Cu+2 फॉर्म है, ये जो कॉपर है from the copper source are reduced to metallic copper, यानी कैथोड के ऊपर ये जो होता है ना Cu+2, यानी ये वाला ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। So you can say that at the cathode all of Cu+2 ions from the solutions are reduced to metallic copper and gets deposited at cathode reactions. So cathode is reductions. So this is the gain of electrons to electrons by copper. So this is the reduction also. So this is the reduction. You can say reduction of copper ion into Cu
metal solid form. So in this case, in this way, copper is purified. So next is as the electrolysis is continued, copper from the anodes goes into solution. The traces of more active metals like zinc, iron, etc. are also dissolved. Uh, the less active metals, for example, gold and silver, A and Ag, remain undissolved and settled at the bottom of the cell is a node sludge. It is processed to recover these precious metals. The voltage and temperatures conditions are such that only copper is deposited to the cathode. So you can say जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं तो कॉपर जो है वो एनोड से सोल्यूशन में चले जाते हैं यानी कॉपर जो है एनोड से सोल्यूशन में चले जाते हैं और फिर ट्रेसेस ऑफ मोर जो एक्टिव मेटल्स होते हैं जिंक और आयरन ये मेटल्स होते हैं ये भी हल हो जाते हैं साथ साथ और द लेस एक्टिव मेटल्स फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर जो है ये अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में रह जाते हैं और ये बॉटम में बैठ जाते हैं और एज ए नोट स्लैग्स तो इसको हम प्रोसेस करते हैं रिकवर दिस प्रीशियस मेटल्स इनको निकाला जाते हैं गोल्ड और सिल्वर होते हैं the voltage and temperature conditions are such that only copper is deposited at the cathode यानी जो टेम्परेचर और वोल्टेज की कंडीशंस को ऐसे रखती है कि सिर्फ कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट किया जाए तो बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अप टू 99.99 प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड तो इस तरीके से हम 99.99 99% प्योर कॉपर को हम हासिल कर लेते हैं तो ये उसका दिया गया मैकेनिज्म हाउ टू refine the copper. So this is refining of copper, as you can say. So this is the sludge. You can say impure. This is impure or blister copper. It's here. So this one. So this is the solution of copper sulfate and sulfuric acid. This one. You can say this solution. This is the solution of copper sulfate and sulfuric acid. So this is put here in this cell in the impure copper. So the copper get dissociated into CO plus 2 form. So again, the copper gain 2 electrons and we can say that it formed solid copper and deposited on here on cathode. So the undissolved metals species such as you can say gold, we have studied gold, silver and gold, they get deposited as a sludge, you can say not, but they're then again recovered. So this copper is refined. So we will discuss about the galvanic cell and voltaic cell in the next lecture.